बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं आमिर जफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, अहम मुलाकातें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाया। पुरवकार तकरीब में अमरीकी कांग्रेसमैन टॉम सुआजी और जोनाथन जैक्सन की शिरकत। इशाये में अहम सियासी समाजी शख्सियात और सिफारती नुमाइंदों की भी शिरकत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर और अमरीकी सफारत खाने के आला हुकाम भी शरीक हुए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की जानिब से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान टॉम सुआजी और जोनाथन जैक्सन की शिरकत। इशाये में अहम सियासी समाजी शख्सियात और सिफारती नुमाइंदे भी शरीक हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, अहम मुलाकातें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की जानिब से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाया दिया गया। इशाये की पुरवकार तकरीब में अमरीकी कांग्रेस के अरकान टॉम सुआजी और जोनाथन जैक्सन शरीक हुए। अहम सियासी समाजी शख्सियात और सिफारती नुमाइंदे भी शरीक हुए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और उनका खैर मकदम किया। मियां आमिर महमूद का कहना था कि शिकागो और लाहौर सिस्टर सिटीज हैं। You all made it. I'm very happy, very delighted to have all you here, especially our guests from USA. I was telling a congressman from Chicago that I signed a deal of sisterhood with Chicago back in, I think, in 2004-2005. अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मजीद काम करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। उनका ये भी कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करेगा। We want to enhance the relationship between the United States of America and the country of Pakistan. And we've had a long relationship with a lot of ups and downs along the way between our two countries. Now we need to start moving forward together to try and recognize that there's so much potential in the fifth largest country in the world, with tremendous natural resources, with so many young people under the age of 30, with so much information technology ability, so many raw materials, as you mentioned, in the mineral space. Let's try and work together to work on counterterrorism, to enhance relationships in the region. अमरीका में पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन शाहिद खान ने कहा कि अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ्द का दौरा बहुत कामयाब रहा। बहुत अरसे बाद ऐसा वफ्द पाकिस्तान आया है। इस दौरे से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा ट्रंप इंतजामिया के बाद ये उनका पहला दौरा था। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। We have long-standing ties with the Pakistani community, both in America and here. And now the Pakistani community needs to see Americans coming here in greater numbers to reassure the friendship, to do the continuation of all the tremendous progress we've made. Pakistani security is world security. It's security for the region, it's security for the nation, and it's security for America. We have to take that message back home and bring more colleagues here. And then to see this nation just taking off. इशाये की पुरवकार तकरीब में मुमताज पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद, साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर आजम के मुशीर हारून अख्तर, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, मोहसिन शाहनवाज रांझा, साबिक वजीर फवाद चौधरी, साबिक विफाकी वजीर नवीद कमर, कायमा कमेटी के चेयरमैन राना महमूद उल हसन, सेनेटर अब्दुल कादिर, सहाफी बरादरी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कांग्रेस के मेंबर जोनाथन जैक्सन ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी अमरीका की सिक्योरिटी है। पाकिस्तान को कई दिफाई चैलेंजेस का सामना है। सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया अदा किया। मजीद बता रही हैं मरियम इलाही। जी बिल्कुल, इशाये की तकरीब में हमारे साथ एक दफ़ा फिर अमरीकी कांग्रेसमैन मौजूद हैं। जोनाथन जैक्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं कि उनका पाकिस्तान का विजिट ओवरऑल कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर कांग्रेसमैन। इट्स ट्रूली अ प्लेजर टू हैव यू हियर। आई वांट टू नो योर from the visit that you're here for, what were the most positive areas that you found and the outcomes that you found were are going to be more fruitful? Well, I know many members, and I'm surrounded by members of the Pakistani American and
Pakistan community that have been very loving and very generous with the community in the United States. I've had a outstanding invitation to come here for some time. I've wanted to come here for many years now with my father, Reverend Jesse Jackson. Unfortunately, he's unable to physically travel, but his heart is with me today, and this was a long time in the making, and so I wanted to reciprocate the kindness and friendship. We have long-standing ties with the Pakistani community, both in America and here. And now the Pakistani community needs to see Americans coming here in greater numbers to reassure the friendship, to do the continuation of all the tremendous progress we've made. Pakistani security is world security. It's security for the region, it's security for the nation, and it's security for America. We have to take that message back home and bring more colleagues here. And then to see this nation just taking off and thriving, to see the entrepreneurial spirit that's surrounded by us today, to see the thought leadership, and also being driven by love and compassion, the discipline and unity is really what's most exciting. So we had a chance to go to religious shrines, we've met with ministers, and I think that it's been too long since many top-level American officials since they've last been here. So we wanted to break that ice and to continue our great friendship and move forward. Congressman, you were able to connect with so many people here from almost all aspects of life. How do you see the political dynamics in Pakistan? How do you see the political arena? You have seen everything quite closely now. What's your comment on that? Well, I think what happened with Pakistan after the United States left Afghanistan with the $8 billion plus of military equipment left at their front door has created an enormous amount of physical and geopolitical insecurity throughout the region. And so we have to talk about Pakistani defense. We have to talk about reducing the level of violence that's going around in the country and the nation in this region. I first started coming into this region, if you will, into the Middle East in 1984, when my father successfully retrieved Lieutenant Robert Goodman, then out of Syria. And then we came over here to talk with Saddam Hussein, and we retrieved 400 hostages, if you will, people that were placed as human shields. And now I see the two-decade war that went on in Afghanistan, and now I see the isolation of Iran. It's been a continuous, if you will, domino effect, and we have to give peace a chance. And so we want to try to break that cycle of violence, and also want to expand on the good things that are happening over here. We went to the border to see where Pakistan and India have a neutral zone where the Sikhs are able to come. That's a very positive, if you will, improvement, where many Sikhs are feeling their sense of religious freedom. We were able to talk with religious leaders here. And so we're very excited about all the great things and the entrepreneurial spirit that's in this country, the youth of this country that's looking forward. They don't understand the past. They know there's a future that God provides for them. And that's what we're here today to capitalize on that. We want to continue to win the hearts and minds of the current and the future generation in Pakistan. And that's why I'm so excited about being here today. You're certainly winning those hearts already, sir. Thank you so much for your time. It was truly an honor to have you here, and I hope your entire trip was as meaningful as you said. Welcome to Islamabad. I'm planning on coming back soon. Thank you so much, sir. Thank you. हमारे साथ अमेरिकी कांग्रेसमैन जोनाथन जैक्सन मौजूद थे. उन्होंने तफसीली बात की कि पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ के हवाले से उन्होंने जो है यहाँ पर उन जगहों को मॉनिटर किया, चीज़ों को देखा, समझा. इस हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की नेबर्स की सिक्योरिटी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी अमेरिका की सिक्योरिटी है. यहाँ से जो कुछ वो देख कर जा रहे हैं और जो कुछ लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर मज़ीद जो है वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा. जी आगे बढ़ते हैं. अमेरिका में पाकिस्तानी नैयाद बिजनेसमैन शाहिद खान ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन के वफ्द का दौरा बहुत कामयाब रहा. बहुत अरसे बाद ऐसा वफ्द पाकिस्तान आया है. इस दौरे से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे. मज़ीद बता रही हैं मरियम इलाही. अमेरिकी कांग्रेसमैन के हवाले से जो अशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, वहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो है वो शाहिद खान मौजूद हैं. इनके हवाले से आपको बताया चलूँ कि इससे कबल बाइडन इंतज़ामिया के अंदर जो है एज एन एडवाइज़र भी खिदमात सर अंजाम देते रहे और पाकिस्तानी कम्युनिटी को अमेरिकन कम्युनिटी से कनेक्ट करने में और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने में भी इनका खासा रोल जाना जाता है. उनसे बात करके जानते हैं कि ये विज़िट कैसा रहा. सर, बड़ा सक्सेसफुल विज़िट मोर और लेस रहा ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन का रहा. आप क्या समझते हैं किस तरह का रिज़ल्ट आपको देखने में नजर आए? बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो पहले ये है कि ये जो इस वक्त का ये जो इशाया जिससे आप कह रही हैं, ये एक गुड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी
تو میرا یہی خیال تھا کہ بسائڈ دی آفیشیل میٹنگ دے ہیو آل دا ٹائم، ایک یہ جاتے جاتے آج رات کو دیر سے ان کی فلائٹ ہے، یہ جانے سے پہلے ایک ایسے گروپ سے ملیں جس میں کراس سیکشن آف دیس سول سوسائٹی ہو، جس میں بینکرز ہوں، جس میں بزنس اونرز ہوں، جس میں میڈیا اونرز ہوں، اور آل کائنڈ آف پالیٹیشینز ہوں، منسٹرز ہوں. آپ نے دیکھا ہر قسم کے لوگ یہاں پر تھے، دی ٹاپ پیپل ان دی سوسائٹی آف پاکستان. تو وہ بہت ان کے لیے اب سارا راستہ یہ جائیں گے، یہی باتیں کریں گے، دے ول ٹیک دیز ود دم رائٹ. تو ایک تو یہ جو ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ مقصد تھا اس کو کرنے کا. ان کا جو ٹرپ تھا، جو کانگریس مین کا ٹرپ پاکستان کا تھا، ایکسٹرا آرڈنری سکسیزفل تھا. ایک تو یہ بہت عرصے کے بعد کنگریشنل ڈیلیگیشن آیا ہے، اس ڈیلیگیشن کے آنے سے جس طرح ان کی میٹنگز ہوئی ہے، ایک جس طرح کی پرسیپشن تھی اباؤٹ پاکستان، ایک تو وہ بہت چینج ہوئی ہے. اب ان کے خیال میں پاکستان وہ نہیں ہے جو یہ سوچ کر آئے تھے. اب یہ جائیں گے اور پاکستان کو جو ضرورت ہے امریکہ سے، کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت زیادہ ضرورت ہے، مائنز اینڈ منرل ایکسپلوریشن میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اینڈ اور گرین انرجی میں دیر آر ملٹیپل تھنگز یو کین ورک ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس. میرا خیال ہے اس سے بڑی اپرچونیٹی اب اس وقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ دے آر آل سولڈ. They think Pakistan as a partner. They keep saying about good things about Pakistan, Pakistani American diaspora, and the people of Pakistan, the talent they have seen it here. It is not a country جس کے ایک جنرل پرسیپشن جو ہے کہ یہاں تو ہر سڑک پہ ٹیررزم ہو رہا ہے. Now you can see where we are. So I think everything will be fine. US-Pakistan relation will go to the next level. I am very sure about it. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. It was great to have you here. شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح کا یہ دورہ کانگریس مین کا یہاں رہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح پیپل ٹو پیپل کنیکشن یہاں اس دورے کے دوران لوگوں سے کانگریس مین کا یہاں قائم ہوا، وہ کتنا ضروری ہے دو ملکوں کے درمیان ایک پازیٹیو جو ان کے تعلقات ہیں اور روابط ہیں ان کو بڑھانے کے لیے، اور کس طرح کی میموریز وہ یہاں سے لے کر جائیں گے. ناٹ جسٹ انویسٹمنٹ اور جو بزنس کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے علاوہ بھی جو یہاں سے وہ لے کر گئے. تو انہوں نے کہا کہ شاہی کی ایک بہت خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر جاتے جاتے ان کے لیے ایک پازیٹیو سی امیج جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. جی، ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں. ملک کی تاریخ میں پہلی بار رواں مالی سال کے 2 ماہ میں ترسیلات زر 28 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئی ہیں. ترسیلات زر کی آمد میں ریکارڈ اضافہ. پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر مارچ 2025 میں پہلی بار 4 ارب 10 کروڑ ڈالر کی سطح کو چھو گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق ملکی ترسیلات زر میں ایک ماہ میں 37.3% اور ایک سال میں 29.8% اضافہ ہوا. جاری کردہ اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے 98 کروڑ 73 لاکھ امریکی ڈالر موصول ہوئی ہیں. دوسری جانب UAE سے ترسیلات زر کی مد میں 84 کروڑ 21 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 68 کروڑ 39 لاکھ ڈالر اور امریکہ سے 41 کروڑ 95 لاکھ ڈالر موصول ہوئے.